Welcome, welcome. Welcome. Yes, voice is clear. Good, good. Join, join. Please join. I'll start in 1 minute. I'll start in 1 minute. So there is a workshop on this Sunday at 10 o'clock. ठीक है? Come on, come on. Let's not waste time. So yesterday I started thermodynamics and Mundal sir started casting. These are new batches. New batches. ठीक है? तो ओके, चलो अब हम अपना काम करेंगे सर. परफेक्ट. फर्स्ट से आएंगे सर, फर्स्ट से. चलो चलो चलो, आ गए. विल स्टार्ट सर विदाउट वेस्टिंग टाइम. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. सो वी हैव सम वेरी गुड क्वेश्चंस. इससे तो मुझे लगता है तीन चार तो आना चाहिए. चलो, तैयार हो गए सब लोग? वॉइस सब क्लियर है? दीनबंधु दुखहर्ता. चलो, राइट शेड्यूल है सर. बार्क इंटरव्यू का भी करना है, क्या करना है, बहुत टाइट शेड्यूल है. चलो, लेट्स स्टार्ट. लेट अस स्टार्ट. ओके ओके सर, सब लोग तैयार हैं? चलिए. एंड प्लीज डू नॉट यूज कैलकुलेटर्स. तो व्हाट आई हैव डन इज I have gone through some of the questions of PSU examinations. So I found that there is a mixture of theory and numericals. It doesn't mean कि only theory आ रहा है. No, there is a combination of numericals and good afternoon, good afternoon. कौन कौन है एक बार सबको good afternoon बोलेंगे? सौरदीप, अब्दुल रहमान, उसके बाद कर्म, अमरीश, अमन गुप्ता, सौरभ पटेल, सुमन, डॉक्टर कोमल. ठीक है, चलो. विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स प्रोसीड सर. आराम से करेंगे. सो इट इज अ कॉम्बिनेशन एंड प्लीज डू नॉट. मैं कैलकुलेटर यूज करता हूं सर. आई विल यूज बट यू पीपल डोंट यूज. एंड यू पीपल बिकॉज इन बीईएल डेट आ गया ना. इट इज ऑन 31st May. इट इज ऑन 31st May. ठीक है, आई विल यूज बट यू आर नॉट सपोज टू यूज इट. ओके ओके, चलो ना. कैंटिलीवर, इसको साउंड छोटा करेंगे सर विदाउट वेस्टिंग टाइम. विदाउट वेस्टिंग टाइम, ठीक है. A cantilever beam of length L carries a UDL of W per unit length across the whole span. What will be the value of maximum shear force? It's not stress and maximum bending moment. देखो सर, this is a cantilever and this is of length L. तो क्या मैं आपके ये देखूं सर? शुड आई सी? नहीं ना, कमेंट्स नहीं. इफ देर इज एनी प्रॉब्लम आप मुझे कॉल कर सकते सर अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो. देखो देखो, अब मैं कमेंट्स नहीं देखूंगा सर.
बिकॉज इफ आई स्टार्ट सीइंग कमेंट्स कमेंट्स कमेंट्स, सो मैं वही बोल रहा हूं सर, कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, मैं यूज करता हूं, आप मत यूज करो। अरे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप एक, I said, if there is any problem in streaming or if there is any problem in the session, you call me because I'll not see your comments. Will that be fine? Okay, रे बोलो. Okay, okay, sir. Abdul call करेगा. Okay. Now there is a UDL. This is W per unit length. Okay. Now you tell me where is the shear force maximum. एक बार देखना. The total shear force is for 1 meter length it is L W. For L meter it will be WL. So अगर मैं free body diagram इसका draw करता हूं, if I draw, understand carefully. So there is a downward load. So reaction should support upward. So what will be the force, sir? It is W into L. The total load is WL. Excellent, sir. And where is that WL? ये तो downward है. Where is that WL acting? It is acting at L by 2. तो वेर इज द बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम, सर देखो एक बार आराम से देखो सर. इफ यू ऑब्जर्व, ही इज आस्किंग मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, बहुत क्लियर है. यहां पे बेंडिंग स्ट्रेस इज जीरो. आई एम नॉट ड्राइंग द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, आई एम नॉट ड्राइंग एसएफडी शेयर फोर्स डायग्राम, जस्ट कैजुअली आई एम डूइंग नॉर्मली. तो इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता बिकॉज इट इज द अपवर्ड लोड एंड व्हेन यू गो देयर इज अ डाउनवर्ड लोड. सो डेफिनेटली द shear force is decreasing. Here it is maximum and decreasing zero here. So therefore the maximum shear force is WL, and the what is maximum bending moment? WL into L by 2. So the maximum shear force is WL and the maximum bending moment is WL into L by 2. WL into L by 2, WL square by 2. I think option 4 is correct. Is it okay, sirs? Is it okay? Yes. Next. आराम से देखो. हाँ. Try and please note down that, sir, in BEL calculator is not allowed. He will not give any numericals. ऐसा नहीं है sir. I have some information. So please ऐसा नहीं है. तो but calculation will be very simple. आप लोग सब ready है? Okay, right. The dry saturated stream enters the nozzle with negligible velocity. So this negligible velocity. At a temperature of 300, the enthalpy is given. It is expanded to a pressure of 5 and isentropically, and the enthalpy is given. What will be the exit velocity? एक second देखो. Nozzle. Is he talking about kinetic potential energies? No. So therefore, I'm sorry. Is he talking about potential energies? No. Very good. Nozzle means no work transfer. Nozzle means so, and clearly he said it is expanded isentropically. I'll take it as reversible adiabatic. So adiabatic means heat transfer is zero. So therefore, H1 plus C1 square by 2000 is equal to H2 plus C2 square by 2000. And clearly he said the inlet velocity, it enters with negligible velocity. This is gone. So H1 minus H2, directly I am doing, into 2000 under root is equal to C2. Directly I am writing, sir. अब पूरा एक्सप्लेन करते नहीं बैठूंगा. आपकी कमेंट्स ही नहीं आ रहे. सबको समझ में आ रहा है सर? कमेंट्स आ रहा है? इज देयर एनी प्रॉब्लम? हाँ, सब लोग जिंदा है ना? वेरी गुड. सो रूट ऑफ 2000 इंटू, सो डोंट थिंक दैट कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड. कॉमन सेंस से भी करना चाहिए. H1 minus H2. What is, देखो, H1 is 27151, H2 is 2651. What is the difference between them? देखो, 5151 is common, 2 is same, 7 and 6, the difference is 100. So enthalpy difference is 100. That is equal to C2. Exactly. तो अब देखो सर, रूट ऑफ 20 ऐसे रखेंगे. So 20 ऐसे रखेंगे. 2 zeros, 2 zeros, 4 zeros means into 100. What is root 20? Root 25 is 5. So root 4 is 16 is 4. So it should be in between 4 and 5. 4 point something into 100. 4 point something into 100. So it will be 400 something. This is ruled out. This is ruled out. This is ruled out. This. ये मत बोलना कि सर कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड. कॉमन सेंस है. इज इट ओके सर जी? अरे नो वन इज गिविंग आंसर. मैं बंद करूंगा सर दुकान. मैं दुकान बंद करूंगा सर. मैं दुकान बंद करूंगा सर. आई एम स्टॉपिंग द क्लास. मैं स्टॉप कर रहा हूं सर.
क्योंकि आप लोग आंसर नहीं दे रहे, योर इन्वॉल्वमेंट इज वेरी पुअर। नेक्स्ट, dash is a boiler mounting. Look at, mountings are inevitable. Without mountings, boiler cannot run. Accessories, whether accessories are there or not, it depends on whether you want more efficiency or not. तो आपको पक्का mountings तो चाहिए ही चाहिए. Look at, air preheater is a accessory, economizer is an accessory, superheater is an accessory. So fusible plug is a mounting, because if the water level falls, that fusible plug melts and thereby stops the fire. That is one of the precautionary measures. So is it okay, sir? बोलो रे, यस सर जी, यस सर जी, हाँ ये करो. द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन इज, व्हाट इज सरफेस टेंशन सर? इट इज न्यूटन पर मीटर. न्यूटन इज, फोर्स इज MA, force is Newton, mass is kg, acceleration is meter per second square. Newton means mlt minus 2, so therefore Newton is mlt minus 2 and meter is L, तो ये कट जाएगा, it will be mt power minus 2. And I'm so confident that आज के सेशन से मुझे लगता है कि 4 to 5 क्वेश्चंस विल कम. देखना सर, एग्जाम के बाद आप बताएंगे. इज इट ओके? कमेंट्स करते जाना. ओके सर जी. नाउ टेक दिस. Which of the following represents the slope of constant pressure line on TS diagram for an ideal gas? Wait. We know that TDS is equal to dH minus VdP. It is one equation. For which process is he asking? Constant pressure. When pressure is constant, change in pressure will be zero. So ये zero होगा. So therefore dH by d, एक सेकेंड, कौन है रे वो? देखो TDS, but clearly he said ideal gas. For ideal gas, dH can be written as Cp dt. So dt by ds is equal to, dt by ds is T by Cp. He is asking on which diagram, sir? Temperature entropy. On temperature entropy diagram, what is the slope, sir? What is the slope? dy by dx, dt by ds. This is the slope. This is the slope. But this is the slope for which process, sir? Constant pressure, T by Cp. So therefore the answer is T by Cp. The same question, if it is asked for constant volume, what will be your answer, sir? If the same problem is asked for constant volume, what will be your answer, sir? Very simple, T by Cv. Same question can be asked in different fashion. Idhar dekho sir. TDS is equal to du plus PdV. If the volume is constant, there are twin TDS equations. दो TDS equations होते हैं. If the volume is constant, it is isochoric. ठीक है सर जी. And change in volume is zero. So therefore, TDS is equal to du, because dV is zero. For an ideal gas, du can be written as Cv dt. So if you want slope on TS diagram, it will be dy by dx, that is dt by ds. So क्या होगा सर? T by Cp. So therefore, for constant volume process, it is T by Cv, and for constant pressure, it is T by Cp. And one more thing, and for constant pressure, it is T by Cp. For constant volume, it is T by Cv. And you know, Cp is greater than Cv. So he may be asking the same question, which process has more slope on TS diagram? The same question can come. देखो, Cp is greater than Cv, but Cp is in denominator. As this is in denominator, this constant pressure slope will be less. Constant pressure slope will be less, and constant volume Cv is less, so constant volume slope will be more. एक second. Is it a positive slope or negative slope? That you have to understand first. Is it a positive slope or negative slope? First you understand. And you know, temperature is in Kelvin, so ये positive ही है. Cp and Cv are positive, so it is a positive slope. Therefore, now if I plot on TS diagram, you will have something like this. देखो, so more slope is constant volume, less slope is constant pressure. Such question can also come. Is it okay, sir ji? Is it okay, sir ji? Sir ji, Tapendra Verma, Sauradeep, Satapati, Abdul Rahman, Saurabh Prawal, जो भी है, चलो ये ले लो. हाँ, ये करो, देखते हैं. ये कर रहा हो, वो कर रहा हो, ये कर रहा हो. Don't think that numericals are not coming. Numericals may come, but
न्यूमेरिकल्स मे कम बट कैलकुलेशन यू हैव टू टेक केयर। करो सर, ये क्वेश्चन देखते हैं सर। An ideal gas having, actually it is Newton per meter cube. Can you tell me what is this? It is the specific weight. So the specific weight can be written as rho g. The specific weight is given in as 20 Newton per meter cube. Confuse मत होना सर, आराम से हम कर सकते सर, आराम से। And the temperature is given as 27 degree, means 300 Kelvin. Okay. And the pressure is, my dear students, 0.26 Newton per mm square. Wait. Can I write this pressure as, can I write this pressure as 0.26 into 10 power 6 Newton per meter square? बिल्कुल लिख सकते सर, क्यों नहीं लिख सकते? Because mm is 10 power 3, 10 power minus 3 whole square is 10 power minus 6. The 10 power minus 6 will go to the top, it will be 10 power 6. This is the equation. Wait. So can I write this pressure? ठीक है sir, no problem at all. And any other data given? Oh my God. Actually, in your examination, उतना कंफ्यूज नहीं करेगा. This will be easily calculatable values will be given. You don't have to worry about that. So you don't have to worry about that. Okay, ठीक है सर. क्या पूछा है सर? What is the gas constant R? You know, my dear students, PV is equal to MRT, or P is equal to M by VRT, or P is equal to rho RT. He is asking the gas constant R. R can be written as P by rho T. P by rho T. One more thing. If the value of pressure is in kilopascal, this will be in kilojoule per kg per Kelvin. If the value is in pascal, it will be joule per kg per Kelvin. You are keeping the pressure in pascal, so it will be joule per kg per Kelvin. देखो sir, R is equal to, what is the pressure? 0.26 into 10 की power 6 by density. आप बताइए sir, what will be the density? It will be 20. देखो, rho g is this much. Rho will be 20 by g. Therefore, it is 20 by g. ऐसे रखो. Sorry, 20 by g. ठीक है सर. Into temperature is 300. अब देखो सर, इसका कैलकुलेशन, what will be the unit of R? What will be the unit of R, sir? Anyone? What will be the, देखो sir, I'm not saying same questions come, but definitely something related to this. I have selected questions like, ऐसा है कि सारा मिक्स होके, तो कैन यू टेल मी द वैल्यू? डोंट यूज कैलकुलेटर्स. मैं आपको एक सिंपल टेक्निक बताता हूं. इधर देखो सर, सिंपल टेक्निक. 26 by 100, 26 by 100 into 10 power 6. ठीक है. और एक बात, by there is 20 into g into 300. ठीक है सर. लेट मी टेक g as 10. आप बोलेंगे, ध्यान से सुनिए सर, g is given as 9.81. I will take it as 10. तो whatever the value he has given, I am taking more. ये तो न्यूमरेटर में, अगर मैं मोर लेता हूं तो मेरा वैल्यू ज्यादा आएगा, उससे कम वाला मैं ले लूंगा. दैट इज कॉमन सेंस. देखो, सो आई थिंक, देखो, 2 zeros 1 0 मीन्स 10 power 5. तो ये गया, तो 260. जी को भी 10 ले लेंगे, बाई 3 to 6. ये आ रहा है सर, देखो 3 to 6. बस खत्म है सर. कितना आ रहा है सर? एनीवन? दिस विल बी इन जूल पर केजी पर केल्विन. अब बताओ सर, अब बताओ क्या है सर? 6 4 24, 2 बचा है 3 समथिंग. सो एक्चुअली कितना आना चाहिए सर? आराम से देखो. तो ये 4 आंसर सही है, या इट शुड बी लेस देन दैट. जी, इट शुड बी लेस देन दैट. ये वैल्यू सही है, बिकॉज आई हैव टेकन दिस इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल. तो ये किस में आएगा सर? ये जूल पर केजी पर केल्विन में आएगा, बट दिस इज गिवन इन किलो जूल, सो दिस इज रॉन्ग. व्हाट इज द आंसर सर? कोई बता सकते सर? व्हाट इज द आंसर? हो आंसर बताओ सर, देखेंगे. वाह वाह वाह, यही तो होता है सर, यही तो होता है सर. क्या हो रहा सर? वाह 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 वाह, बहुत मुश्किल है सर. दिस इज द वे. ऑलरेडी P इज गिवन इन पास्कल. ये पूरा आंसर यू गेट 430 समथिंग, 432 जो भी है, इट विल बी इन जूल पर केजी पर केल्विन.
बट यहां पे 430 समथिंग देखो, यू आर टिकिंग 4 बट इट इज किलो जूल, तो सी इज द आंसर। नहीं आ रहा सर। क्या कभी गैस कांस्टेंट का वैल्यू 425 किलो जूल, कॉमन सेंस यूज करो सर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर फॉर एयर? 0.287, 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन। क्या कभी 287 किलो जूल देखे सर? क्या है रे बच्चों, गलत सर। सो आज यू पीपल हैव लाइक, मैं हर्ट हो गया सर, वेरी सैड, वेरी सैड। ऐसे सिंपल थिंग्स अगर आप एग्जाम में इफ दीज सिंपल थिंग्स इफ यू आर कमिटिंग मिस्टेक्स, बहुत मुश्किल होगा सर, वेरी सैड। आई एम नॉट हैप्पी विथ यू, आई एम टोटली सैड, बहुत बुरा लग रहा है। मैं जा रहा हूं सर, मैं निकला क्लास बंक करके। ये देखो, बॉर्डन ट्यूब इज यूज टू मेजर, बताओ। यस, इट इज यूज फॉर मेजरिंग प्रेशर। एक्चुअली वो कुछ ऐसा रहता है सर, ऐसा रहता है। यहां पे एक क्या बोलते हैं, जब सेंसर रहता है ये फैल जाता है सर, ट्यूब, सो इट इज यूज फॉर मेजरिंग प्रेशर। बोलो एक बार, प्रेशर। बहुत बढ़िया, देखते जाना। 5-6 क्वेश्चंस, फर्स्ट बीईएल, सेकंड बीईएल, उसमें 4-5, इसमें 4-5, देखते जाना, मैं कुछ बोलूंगा नहीं सर। ये करो, वारे 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 वारे, करो आंसर। कम ऑन कम ऑन, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. A heat engine receives heat from a source at 1200 Kelvin at the rate of 500 kilowatt. Achha, that much heat is it. And rejects waste heat to the medium at 300. Okay, the power output of the engine is 180. What will be the irreversibility of the system? Answer दीजिए सर, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। डा 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 डा। सैड। विराज पटेल, टेल बोले एक बार सब लोग, टेल। देखो एक बार, बहुत ही सिंपल है सर। व्हाट इज द एक्चुअल वर्क डेवलप्ड बाय द इंजन? द पावर आउटपुट ऑफ द इंजन इज 180 किलोवाट। दिस इज द एक्चुअल। व्हाट इज इरिवर्सिबिलिटी सर? इरिवर्सिबिलिटी इज नथिंग बट जो मैक्सिमम माइनस एक्चुअल डिस्ट्रॉय हुआ, दैट इज इरिवर्सिबिलिटी। बस खत्म सर। इधर देखो सर, नाउ व्हाट इज द सोर्स टेम्परेचर सर? द सोर्स टेम्परेचर इज 1200 केल्विन एंड हाउ मच हीट इट इज टेकिंग सर? इट इज टेकिंग 500। ठीक है सर जी, it is developing some work and it is rejecting. To what temperature it is rejecting sir? I think it is rejecting to 300 Kelvin. ठीक है सर। मेरे प्यारे दोस्तों, मान लो ये रिवर्सिबल है। इफ इट इज रिवर्सिबल, इट विल डेवलप मैक्सिमम वर्क। सो इट विल डेवलप मैक्सिमम। अगर रिवर्सिबल है, मैं बोल रहा हूं अगर रिवर्सिबल है, एक्चुअल तो ऑलरेडी गिवन, मैक्सिमम है। So you tell me, if this is reversible, Q2 is not given, what will be maximum? Let us assume this to be Q2. If this is reversible, what can I write? I can write, अगर reversible होता है तो Q1 by T1 is equal to Q2 by T2. This is valid only for reversible. It is 500 by 1200 is equal to Q2 by T2 is 300. Can you give me the value of Q2, sir? Can you give me the value of Q2? Anyone? 4 आ रहा है। 4, is it 125? Is it 125? Correct na? Yes. So what will be the maximum work, sir? The maximum work will be equal to Q1 minus Q2, that is 500 minus Q2 is 125. You give me the value of maximum work. I think it is 375 if I am not wrong. Yes, sir. So what is irreversibility? Maximum minus actual. So therefore irreversibility is given by the max. Did I use calculator, sir? Nah, I have not used calculator. I have not used calculator. 195 is the right answer. Anyone got the answer as 195? Galtiyan mat karo, sirs. Do not commit mistakes. Please do not commit mistakes.
बहुत बढ़िया, आंसर सही है सर। क्लियर क्लियर क्लियर। चलो, सही है, बोलो बोलो। यस यस, नो, टेक दिस, ये वाला ले लो। हाँ, देखते हैं सर, हाउ मेनी ऑफ यू कैन गिव आंसर टू दिस। पेंद्र, पेंद्र, तप 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 तपेंद्र रे। Come on, come on. No one is giving answer. I want the answer for ninth question. So, दिख रहा है सर आपको? I think there is no problem. Visibility is good. Visibility is good, I think. A, 3, सब लोग अच्छे अच्छे अलग अलग आंसर दे रहे। एक बार चेक करना सर, बहुत दिन हुआ, मैं भूल गया। आई हैव वन टेक्निक। टीवी के पास, टीवी के पास मत मीन्स नेगेटिव, जाना। अगर वी है तो वी है, अगर एस है तो यस, ये तो सही है सर। डो टी बाई डो वी is minus dou p by dou s. This is correct. He is asking which one is not correct. दूसरा इक्वेशन क्या होगा, इसको इनवर्स करो, इसको इनवर्स करो। डो वी बाई डो टी अपॉन इज इक्वल टू डो एस बाई डो पी। ओके, तो अगर यहां पे पी है तो पी आएगा, अगर यहां पे टी है तो टी आएगा। देखो सर, डो वी बाई डो टी, वेरी गुड, इज माइनस डो एस बाई डो पी, उल्टा दिया, it should be, so this is wrong, so this is wrong, which of the following is not correct? B, B, B। किसी को याद है सर इसको? मैं टेक्निक दिया था सर इसका क्लास में, आई थिंक आई गिव यू। यस यस यस, डॉक्टर, ये वाला ले लो। हाँ जी सर, कम ऑन कम ऑन, लेट्स नॉट वेस्ट सर, अच्छा चल रहा है। जूल थॉमसन कोएफिशिएंट और जूल केल्विन कोएफिशिएंट, यू नो, म्यू इज इक्वल टू डो टी बाई डो पी at constant enthalpy or throttling. This is nothing but Joule Thomson coefficient. So what is the answer, sir? What is the answer, sir? Dou T by dou pH. Yes. What is Joule Thomson coefficient for an ideal gas? Anyone in the class? What is Joule Thomson coefficient for an ideal gas? Anyone? ये क्वेश्चन आएगा बीईएल में। दिस इज बीईएल 2025 क्वेश्चन। फॉर एन आइडियल गैस जूल थॉमसन कोएफिशिएंट इज 0, लिख के रख लेना, लिख के रख लेना। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन से पहले, ये क्या है, मार्च 13, एग्जाम कब हो रहा है, 30, सॉरी, मे 13 है, एग्जाम कब है, मे 31, तब डिस्कस करेंगे। बहुत बढ़िया, ये वाला ले लो। हाँ, सिंपल क्वेश्चन। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, क्लियरेंस वन दिया, स्ट्रोक वॉल्यूम दिया, सक्शन वॉल्यूम। व्हाट डज सक्शन वॉल्यूम रिप्रेजेंट? It is the actual volume entering. This is the actual volume entering. And this is the stroke volume is swept volume. What is the equation of volumetric? ऐसे questions बहुत आएंगे sir. Such questions are dominant. The volumetric efficiency is given by actual volume by swept volume. ठीक है? What is the actual volume, sirs? What is the actual volume? The suction volume, actual volume is 0.0084 and the clearance volume is swept volume is this one. कितना आ रहा है सर आंसर? If you want in percentage, multiply with 100. I think you can do it very easily. I think we can do it very easily. तो ये 4 zeros, ये 2 zeros, तो
Yeah, I think 84 is the right answer. Is it okay, sir जी? किसी को आया रे? Anyone got this answer? No one got. चलो भाग जाओ. ये करो. करो करो करो. ये कर रहा वो कर रहा ये कर रहा रे. आंसर दीजिए. No, sir. Surge tank is for pressure fluctuations. It is surge tank is like a flywheel. ये spillway is something like this. देखो देखो एक second. This is the spillway. Suppose we have water level. Listen, sirs. Suppose we have water level. Now पानी है. So if the water level is more, क्या होगा? If the water level is more, if the water level increases, it will overflow, and it is whenever the level of water is more, it is a safeguarding measure. So spillway is the right answer. Okay, sir? चलिए. हाँ जी सर. आंसर दीजिए. आंसर दीजिए. डा 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 डी डी डे. Come on, come on. Which of the following is a valid potential function, velocity potential function? We know very well velocity potential function. Chalo, velocity potential function phi should satisfy, it should satisfy Laplace equation. Yes or no, sir? Why it should satisfy Laplace equation? ध्यान से सुनो. U is equal to minus dou phi by dou x and V is equal to minus dou phi by dou y. So every fluid flow must satisfy continuity equation. When nothing is given, we deal with incompressible flows and 2Ds. तो ये हो गया सर. This is the continuity equation. तो अब बताओ dou by dou x of u minus dou phi by dou x plus dou by dou y of v. What is v? Minus dou phi by dou y. This should be equal to 0. तो ये बन जाएगा माइनस माइनस कॉमन ले लेना. Dou 2 phi by dou x square plus dou 2 phi by dou y square should be 0. Always remember that he will give you some velocity potential function and he asks you which one is satisfying. Is it correct, sir? Is it correct, sir? एक बार देखते हैं सर. हाँ. Which one is satisfying? क्या हो रहा सर? क्या हो रहा है सर? The Please listen. The velocity potential function must satisfy Laplace equation. If the velocity potential function is satisfying Laplace equation, it will automatically satisfy the continuity equation and the flow is possible. अभी मैं चांस दे रहा हूं सर आपको आंसर देने के लिए. आई एम गिविंग यू चांस. सब लोग बोल रहे हैं ऑप्शन डी. Most of the students are saying option B. Sorry, D. X cube minus y cube. देखो. X cube minus y cube. I don't know why you commit such mistakes. Dou phi by dou x is equal to 3x square because you are partially differentiating with x तो y तो 0 होगा. तो dou 2 phi by dou x square is equal to 6x. Correct. And here dou phi by dou y is equal to minus 3y square. Dou 2 phi by dou y square is equal to minus 6y. तो ऐड करो 6x minus 6y. Is it 0? Is it 0, sir? Is it 0, sir? It depends on value of x and y. How can you say it is 0? क्या हो रहा सर? बहुत बुरा हाल है. No one has given the answer. Engineer Priyanshu Khushwaha.
अब देखो सर, अभी भी ऑप्शन है, तो दिस इज रूल्ड आउट, अभी भी आपके पास ऑप्शन है सर, स्टिल यू हैव ऑप्शन। बताइए। बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया सर, ये तो बड़ा मिस्टेक हुआ। चलो नीचे से आ रहे हैं तो नीचे से आएंगे। वाई क्यूब माइनस 3x² वाई क्यूब माइनस 3x², क्या है रे, वाई क्यूब माइनस 3x², वाई, भारी मिस्टेक है सर ये। ठीक है सर, अब देखो, व्हाट इज डो फाई बाई डो एक्स, दिस विल बी 0 माइनस 6xy, ठीक है। डो टू फाइव बाई डो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 6x, sorry, I'm sorry, you are differentiating with x, so therefore it will be 6y. Now dou phi by dou x, sorry, y is equal to, you differentiate with y, 3y square minus 3x square. So dou 2 phi by dou y square is equal to, this will be 6y, you are differentiating with y, तो ये 0 होगा. So dou 2 phi by dou y square is equal to 6y. Now you add both. Dou 2 phi by dou x square plus dou 2 phi by dou y square. This is equal to minus 6y plus 6y, and it is 0, sir. So it is satisfying. The third option is satisfying. So the answer is correct, sir. And if you check these two options, they will not satisfy. बहुत बड़ा मिस्टेक किए सर आप लोग, ऐसा हुए तो मुश्किल होगा सर एग्जाम क्लियर होना। सी, आई वॉन्ट टू, देखो एक सेकंड, आई वॉन्ट टू make some important, no, we have to note down certain important points. Some questions may look very easy, so out of over enthusiasm, do not miss those simple questions. So this is the lesson that we have learned now, so you have to be very cautious, that's it. ठीक है, very good sir. Next question, next question. अरे कहां गया, अरे ये ले लो। ओ माय गॉड, प्रोडक्शन, मैं बहुत दिन पहले पढ़ा था सर। द शेयर एंगल is given by r cos alpha by 1 minus r sin alpha, where r is chip thickness ratio, alpha is rake angle. ये बचपन में मैं पढ़ा था सर, when I was in engineering third year. तो क्या ये सही है सर? टू बी ऑनेस्ट, मैं अभी मेटल कटिंग स्टार्ट नहीं किया सर। क्या ये सही है, गलत है सर? आई डोंट नो सर, टू बी ऑनेस्ट मुझे पता नहीं सर, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो, इज दिस इक्वेशन करेक्ट? बताओ सर, ये सीरियसली, आई स्वेयर, आई एम नॉट जोकिंग सर, बहुत दिन हुआ। सही है। तो अब देखो, tan phi is equal to r, what is chip thickness ratio sir? 0.4. यू मे बी थिंकिंग सर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे नहीं। देखो, cos alpha, what is alpha given? 20, cos 20 direct value is given, cos 20 0.94 divided by 1 minus r sin alpha, r is 0.4 into sin alpha. What is sin alpha sir? What is sin 20? Sin 20, sin 20 is 0.34. करो सर। So whatever value you get, it will be tan inverse. तो मुझे तो लग रहा है tan inverse में आएगा। ओ माय गॉड, ये तो शायद रूल्ड आउट। अब देखो आंसर्स बोलो सर। वेरी सिंपल सर, वेरी सिंपल। मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा सर, आपको करना पड़ेगा। यू पीपल हैव टू डू इट सर। अब इसका टेक्निक बताऊं? वेरी सिंपल। देखो, पहले ये नंबर्स मल्टीप्लाई कर लेना, कोई बात नहीं, ये नंबर्स मल्टीप्लाई करना। देखो मैं कर दूंगा सर, ठीक है। 94 इंटू 4, 4 4 16 1, 9 4 36, ये सही है सर? एक सेकंड, एक सेकंड, 4 4 16 1, 9 4 36, पॉइंट 376 कितने हैं सर? 1 2 3, तो 0.376 बाई 34 इंटू 4, 4 4 16 1, 4 3 1, 4 3 12, 130, करेक्ट सर?
इज इट करेक्ट सर? यस, 0.136। तो 1 - 0.136, 0.136 ये होगा 496 होगा, 8 होगा, ये 0.864, 0.864। अब देखो सर, देखो एक बार, कैन वी राइट दिस एज 376/864? डेफिनेटली ये आधे से कम है सर। देखो देखो, 432 इज हाफ, तो ये आधे से कम है। दिस विल बी लेस देन 0.5, दिस विल बी लेस देन 0.5, tan इनवर्स लेस देन 0.5। देखो ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ, अब डाउट आ रहा है, ये दो में, ये दो में आ रहा है सर, ये दो में आ रहा है, तो ये रूल्ड आउट, ये रूल्ड आउट, डाउट आ रहा है ये दोनों में। अब देखो सर, इज इट नॉट लगभग, देखो देखो एक सेकंड, is it not roughly close to half? Can I say it is close to half? मतलब 40% ऐसा। So definitely this will be answer. Logic समझ में आया सर आपको? क्लियर और नॉट क्लियर? देखो इसमें मैं क्लैरिटी से दे रहा हूं। देखो कितना, डिड आई यूज कैलकुलेटर? आप बताइए सर, क्या मैं कैलकुलेटर यूज किया? आप बताइए। देखो सर, ये मत बोला सर ये कैलकुलेटर नहीं था लेकिन लेंदी कैलकुलेशन था। कॉमन सेंस, कूल रहेंगे तो बन जाएंगे। आज कुछ सीख लिए सर, सब्जेक्ट के साथ साथ कुछ सीख लिए सर। क्वेश्चंस में अपियर टू बी वेरी इजी, बट इन माई माइंड आई मे बी थिंकिंग समथिंग। आप ना वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन का गलत कर दिए, उसके साथ साथ और एक भी गलत किए सर। ऐसा मत करो सर। ये करो, ये करो, देखते हैं। कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। इसी पैटर्न पे आएगा सर क्वेश्चन। मैं 2-3 मॉडल टेस्ट कंडक्ट करूंगा सर आपको। ओके, a prismatic bar with a rectangular cross section of 20/20. So what is the area, sir? Area will be equal to 4 to 8. I'll write this as 800 square mm. देखो 4 to 8, 800, and the length is given as 2.8 meter. So I will write this as 2800 mm. देखो, and is subjected to an axial force of 70 Newton, kilonewton, 10 power 3. The elongation is 1.2 mm. What is the tensile stress and strain? The stress is given by P by A. So stress is, एक बार देखना, the stress value is given in megapascal. What does megapascal mean? Newton per mm square. So don't change the area. 70 into 10 power 3 by so many Newton by area is 800. देखो सर, सिग्मा इज इक्वल टू, कुछ कैंसल होगा सर? ये दो जीरोस जाएगा, ये दो जीरोस, ये दो जीरोस, तो 700/8, तो कितना आएगा सर? 8, 8864, 8864 और 60 बचा है सर। और 60 बचा है सर, तो कितना होगा? 8 7 56, 56 का मतलब 4 बचा है, 0.5। सो 8.75 इज रॉन्ग, 8.75 इज रॉन्ग। ये दोनों में एक सही हो सकता है सर। एनीवन गॉट दिस वैल्यू? देखो आई एम नॉट, आपके लिए मैं भी कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहा हूं सर। सही बोले शुभम रावल, सही बोले, लेकिन आप लोग नहीं आते ना। वेरी गुड, ये हो गया सर। नाउ आई वांट द स्ट्रेन। व्हाट इज द स्ट्रेन सर? इट इज द चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। तो both should be in same units. So what is the change in dimension? 1.2. And what is the length? 2800. आराम से देखो, एक काम करते हैं सर, एक काम करते हैं, 12/28। देखो 12/28 इंटू 10 पावर -3, सही है या गलत है? इधर देखो, ये 10 पावर ये ऊपर जाएगा, ये 10 नीचे आएगा, तो 12/28 इंटू 10 पावर -3। बहुत बढ़िया। तो और एक काम करता हूं, 120/28 इंटू 10 पावर -4 करूंगा सर। इसको दो, एक शून्य दूंगा, ये हो गया
कैलकुलेशन करो सर। 30 अगर है तो ये कितना आएगा सर? अगर ये 30 है तो 4 आएगा। अगर ये 30 है, अगर ये 30 है तो 4 आएगा। लेकिन ये 30 से कम है तो 4 से ज्यादा होगा। सो देयर फोर इट विल बी 4 पॉइंट समथिंग इंटू 10 पावर माइनस 4। खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय, गया। आया नहीं सर? कॉमन सेंस देखो सर, कितना अच्छा पढ़ा रहा हूं आपके लिए। व्हाट इज द ऑप्शन सर? आया? ध्यान दो सर, ध्यान दो। सिंपल थिंग्स आर ऑलवेज कॉम्प्लिकेटेड। डी आ रहा है, ये ई आ रहा है? 1 2 3 4 5 428 इंटू 10 पावर माइनस 5। तो ये होगा 42.8 इंटू 10 पावर माइनस 4। तो ये गलत है। आई थिंक बी, 2 इज द राइट आंसर ना? बी इज द राइट आंसर। यस, बी इज द राइट आंसर। यस सर, प्रैक्टिस करो सर, प्रैक्टिस करो। मैं कुछ कैलकुलेटर यूज किया सर, आपके लिए भी कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहा हूं। देखो ये कॉमन सेंस देखो, 28 का मतलब ये 30 हो जाएगा, 30 का मतलब 30 फोर्स, तो ये कम है तो ये ज्यादा होगा 4 से, 4 पॉइंट समथिंग। यस, एंड डोंट से कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, अलाउ ही नहीं है। ये करो, देखते हैं। लेट मी सी। करो करो। Body weighs 20 Newton and 40 Newton when submerged in liquids of specific gravity 0.8. So can I call 0.8 का मतलब 800 kg per meter cube? Can I call 1.2 as 1200 kg per meter cube? Yes. Is the actual weight of the body given? No. You will get the actual weight of the body only when you weigh it in air, because in air the buoyancy effects are negligible. So let W be the actual weight. So, in the fluid of density 800, what is its weight? 20. So, weight loss is equal to buoyancy force. So, W is the actual weight minus 20. So, this is the weight loss. This is the weight loss. Weight loss should be equal to buoyancy force. What is buoyancy force? Density of the fluid, G into volume of the fluid displaced. You are immersing the body completely. So whatever the volume of the body is there, that will be volume of the fluid displaced. So therefore, all these I had explained in class. ठीक है सर, ऐसे questions आएंगे. So therefore, now W minus 20 is equal to, in which fluid the weight is 20, whose density is 800. 800 into G into volume. Excellent, sirs. Very good. And another case is its weight is 10. So W is the actual weight. In that it is 10, weight loss is this, should be equal to, in second fluid 20 के प्लस में 10, the 800 के प्लस में 1200, so it will be 1200 G into V. What is asked in the question, sir? क्या पूछा है sir? What is asked? What is asked in the question, sir? अब please, it's a request, do not use calculators. आप कैलकुलेटर इस्तेमाल मत करना. So therefore, now I write W minus 10 is equal to 1200 GV and W minus 20 is equal to 800 GV. तो ये सब्सट्रैक्ट करो, माइनस का मतलब प्लस, 20 minus 10 is 10, सब्सट्रैक्ट करो, तो 1200 minus 800 is 400 GV आराम से. तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 10 by 400 into G. करेक्ट सर, करेक्ट. देखो सर, एक काम करते हैं सर, लेट अस टेक G as 10, so it will be 4000. If I take G as 10, तो ये करेक्ट सर, बिल्कुल सही है सब. तो इसको लिखूंगा 10 by 4 into 10 power minus 3. So 10 by 4 into 10 power minus 3. 10 by 4 is 2.5 into 10 power minus 3. But actually I have taken G10. तो अगर तो कम लेता हूं तो ये वैल्यू थोड़ा ज्यादा आएगा, 2.5 से थोड़ा ज्यादा. वाह, क्या कर रहा हूं सर मैं भी बिना कैलकुलेटर से. सही है गलत है सर? वाह, मानना पड़ेगा रे. विदाउट कैलकुलेटर वी आर डूइंग
वाह, मानना पड़ेगा। नहीं मानेंगे आप, छोड़ दो। मानना पड़ेगा। ये करो, डू इट। ये करो, वो करो, ये करो रे। 15th आंसर, अरे यार, ऑलरेडी हैव गिवन ना 15th। 15th का क्या आंसर दिया था? इज इट टू? आई थिंक आई हैव गिवन। विच आंसर आर यू गिविंग सर? सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर गिविंग आंसर्स। देखते हैं सर। The compression ratio corresponding to the maximum output per unit mass in Otto cycle between the maximum temperature of upper temperature 33 lower temperature. Okay, अच्छा सवाल है सर, इसको इज्जत देंगे हम। This is a good question, let us respect this question. ठीक है सर जी। This is isentropic compression, constant volume heat addition, isentropic expansion and constant volume heat ejection. बहुत बढ़िया। Now, do you know, do you know what is the condition for maximum work output? He has given, sir. He is asking for, kahan gaye re? Maximum work output. Can anyone in the class tell what is the condition for maximum work output? Ye aayega sir question. I'll tell you. For maximum output, temperature after compression and temperature after expansion must be same, and that will be equal to, I'll write T2 must be equal to T4 must be equal to under root of T1 T3. The same condition can be obtained even in Brayton cycle. Is it correct, sir? Yes, very good, Komal. Geometric mean of T1. Very good. This is maximum, this is minimum. And you tell me, what is compression ratio? V1 by V2 is the compression ratio. He is asking this value. You tell me what is process 1 to 2? 1 to 2 is isentropic compression of an ideal gas. So can I write T1 V1 gamma minus 1 is equal to T? पूरा I am not explaining sir. This is a revision class. So क्या हम ऐसे लिख सकते सर? V1 by V2 is, अरे, V1 by V2 is equal to, V1 by V2 is T2 by T1 power 1 by gamma minus 1. 100% sir, 100%. So he is asking this. So what is V1 by V2? R. So R is equal to, but he is asking corresponding to maximum work output. So what will be T2, sir? T2 can be written as root T1 T3 upon T1 power 1 by gamma minus 1. So this can be written as R is equal to, so this root is gone. So root of T3 by T1, but root means 1 by 2. So therefore it will be T3 by T1 power 1 by twice of gamma minus 1. This should be the answer. Anyone got this answer, sir? Anyone got this answer? किसी को आया सर? Yes, very good. So what is the answer, sir? T3 by, I think C is the right answer, na? Is C the right answer? D? क्या हो रहा? Sivanaga Durga Prasad. Is C right or D right? C should be right. What is happening, Ray? ये करो, ये आपको आईसी इंजन ले जाना पड़ता, ये आपको आईसी इंजन ले जाना पड़ता है सर. So the compressor of a turbocharger in supercharging will be studying in IC engine. Mechanical supercharging and turbocharging. In turbocharging, you know, can you tell me at least what is the temperature of exhaust gases, sir? You please tell me what is the temperature of exhaust gases, sir? At least, matlab, I am not asking exact value, but roughly.
मैं क्वेश्चन पूछा, आप सी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो आप कुछ दे रहे। रफली इन एन आईसी इंजन वन गैसेस आर कमिंग आउट, व्हाट इज द एग्जॉस्ट टेम्परेचर, रफली बताओ। हे भगवान, सेट रफली। ओके ओके, आप तो क्लोज आ गए, अराउंड 400, अराउंड दैट टेम्परेचर, 380 400 वो रहता है। यस, डेफिनेटली। कैन आई से देर इज अ thermal energy still available in the exhaust? Yes, sir. Can I say there is thermal energy still available in the exhaust? Yes, sir. So that exhaust gases energy is utilized in running the turbine. That turbine develops power. That power is used in running the compressor, which is used for turbocharging. So by gas turbine mounted on the exhaust. So this is the right answer. Okay, that is turbocharging. Okay, sir. ये बोलो, ये आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। Please tell me all the things about Pelton wheel. मैं लिखता हूं सर, इट इज अ हाई हेड। सो यहां से एक क्वेश्चन आएगा सर। चलो, पेल्टन फ्रांसिस, क्या बात, प्लीज कीप फ्रांसिस इन द मिडल। इट इज अ हाई हेड। It is a, don't think that I'm answering this question only. I'm looking for something beyond this, something beyond. Okay. So it is medium head and it is a low head. ठीक है. It is an impulse turbine. It is a reaction turbine. All these I had explained. What is the physical meaning of impulse? ये तो revision class है. Okay. It is a tangential flow. It is a mixed flow. And this is a axial flow. And the specific speed is low specific speed, medium specific speed. This is high specific speed. Okay, sir. Such questions can come. Such questions can come. Is it okay? Okay, sir. Very good. So Pelton wheel is a high head, tangential flow, low specific speed, impulse turbine. So it is a tangential flow. This is the right answer. Chaliye. Fadafat. All subjects have taken, sirs. All subjects have taken, sirs. ठीक चल रहा है सर? या क्लास ठीक चल रहा है या बंद करो? आप बताइए. Is it going well? Do you want me to close or run the show? मैं एक क्वेश्चन बोलता हूं, ये एक आंसर देता है. वेरी गुड. देखो माय डियर स्टूडेंट्स, गिब्स फेज रूल इक्वेशन इज P plus F is equal to C plus 2. But in देखो ये metallurgical and material science engineering, recently I covered on plus. You know, in material science, what we do is we'll draw the chart for anyone. बताओ सर, we'll draw the chart for, बोलो देखते हैं सर. I mean, जो भी फेस डायग्राम है, जो भी डायग्राम है, विल ड्रॉ. यस, वेरी गुड. कौन है रे वो? मोन्टू. वाह, मोन्टू को सलाम. वी ड्रॉ फॉर अ कांस्टेंट प्रेशर. मींस ऑलरेडी एफ में से एक निकाल देना. नहीं आ रहा है सर आपको? क्या बोल रहे हो? बोलो रे, बोलो रे. एक देखो, लेट मी राइट लाइक दिस. एक सेकंड, एक सेकंड. P plus F minus 1 is equal to C plus 2 minus 1. Is there any problem, sir?
Is there any problem? बिल्कुल नहीं है सर. देखो, I have subtracted. This is the original Gibbs phase rule equation. So I have subtracted one from both sides. So you get P plus F minus 1 is equal to C plus 1. Excellent, sir. So let me write this as some F star is equal to C plus 1. देखो, already the chart is drawn for atmospheric pressure. So one parameter is already known. If one is already known, I need F minus 1. This is my, so ये चाहिए. So that will be equal to what, sir? So अगर आपको ये F star चाहिए, it will be C plus 1 minus P. So therefore, anyone gave the answer? Anyone gave the answer? Mantu? Only Mantu has given. Only Mantu has given. Correct? अरे बोलो रे, is it okay? Already you know if you calculate. From if you remove one. Correct. Sivanaga Durga Prasad. Siva 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 Sivanaga Durga. Yes. Tunnel is a closed one. Penstock closed one. Pipeline closed one. Flume we conduct it. So it is an open channel. ठीक है, ये बोलो. Let's take a break of 2 minutes. Let's take a break of. ठीक है, चलो.
चलो आ गए सब बड़े लोग। क्या बोले? एग्जैक्टली 1 2 क्वेश्चंस केम। ओके आ गए। चलो गुड। On Mollier chart, do you know what is Mollier diagram? This is Mollier diagram. ठीक है सर। Okay, he is asking the slope of isobar. कैसे करें सर? You know that TDS is equal to DH minus VDP. What will be the slope on Mollier diagram? What will be the slope? dy by dx, that is dh by ds. ठीक है सर। So it is at isobar, means pressure is constant. So therefore this dp is 0. So tds is equal to dh and this is 0 for isobar. So dh by ds is equal to t. Now I want to make some important conclusions. So slope is dh by ds, that is equal to t. Option T is correct. Now the same question can be asked in different way. On Mollier diagram, the slope of constant pressure can never be. बोलो सर आंसर दीजिए. The question that I'm asking you is, on Mollier diagram, the slope of constant pressure lines can never be A positive, B negative. Uh, it can never be negative. Very good. Why it is never negative? The slope is equal to absolute temperature. So absolute temperature can never be negative. So Mollier, ये भी सवाल आ सकता देखो. This question can also come on Mollier diagram. Constant pressure slope is never negative. Okay, right. ये करो फटाफट करो सर. Let's not waste time. Come on, complete. Complete. Which of the following equation related to the incompressible flow? For incompressible flow, dou u by dou x, every fluid flow must satisfy continuity equation. This should be 0. Let's see which one is satisfying. Dou u by dou x is 4. Dou v by dou y is minus 2y. It is not satisfying. Dou u by dou x is 1. Dou v by dou y is minus 2y. It is not satisfying. Dou u by dou x is 1. Dou v by dou y is minus 1. Yes, it is satisfying. Is the option 3 correct? Correct, correct, correct. Yes, yes, yes. Underworld Dawn. Oh my God. मेरे क्लासेस डॉन भी पढ़ रहे देखो. Oh my God. ये वाला करो. ये वाला करो. The face of the tooth from pitch circle to the top. Anyone with this answer? Anyone? Anyone? Yes. So face. फ्लैंक का मतलब पिच सर्कल से नीचे. ना ये वाला करो. देखते हैं सर. Just now I told you,
When the head is less than 60 meter, it falls in Kaplan. When the head is between 60 to 250 meter, it is Francis. When it is above 250, it is Pelton. Now he says Kaplan turbine के लिए roughly the suitable option is this. Correct, sir? Yes. ये करो. इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का पहला क्वेश्चन स्वागत कीजिए. स्वागत कीजिए. इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का पहला क्वेश्चन स्वागत कीजिए. पहला क्वेश्चन स्वागत कीजिए. Anyone? Very good, very good. I think I gave you very clearly. The expected time is given by optimistic plus 4 times most likely plus pessimistic by coefficient 1 plus 4 is 5 plus 1 6. I have already given. I gave you with reason in class why how this equation is obtained. I have derived. बताया था. So what is the answer, sir? But in this problem, he is giving optimistic as T1, most likely as T2, and the pessimistic as T3 by 6. So therefore, T1 plus 42 plus T3 by 6. T1 plus, which option is correct, sir? ये गलत है sir, by 6. A is right, by 6. Correct ना? हाँ, very good. ये करो. Complete sir, complete करो. Complete करो. Let's not waste time. In a two-dimensional क्या बोलते हैं flow field, v velocity vector is given by minus y square I cap minus 6x j cap. What is the equation of a streamline passing through one wire? First, you compare with the main fundamental equation, ui plus vj. So, what is the value of u, sir? Minus y square. And what is the value of v, sir? Minus 6x. Am I right, sir? Am I right? Yes. What is he asking? Streamline. The equation of streamline is dx by u is equal to dy by v. So dx by what is u, sir? U is minus y square. That is equal to dy by v is minus 6x. ये कट जाएगा. तो 6x dx, correct? 6x dx is equal to y square dy. Let us integrate this equation. If I integrate this equation, what do I get? X dx is x square by 2. There is 3. So 3x square is equal to y square dy is, sorry, x square by 2, 3x square, y cube by 3 plus some integration constant. And clearly it is passing through 1 comma 1. So put x is equal to 1. So 1 square is equal to 1 cube by 3 plus c. तो ये 3 minus 1 by 3 is equal to c. तो कितना होगा 9 minus 1, c is equal to 8 by 3. तो यहां पे पुट करना सर 3x square is equal to y cube by 3 plus c is equal to 8 by 3. तो ये 3 इधर आएगा. So 9x square is equal to y cube plus 8. 9x square is y cube plus 8, or 9x square minus y cube is equal to 8. Correct? Is C correct, sir? अच्छा क्वेश्चन था सर. C correct. Let's not waste time, sir. फटाफट ये करो. Oh my God, a good question. Come on, do it. ये कर रो, वो कर रो, ये कर रो रे. Make it fast.
Come on, come on. Come on, come on. This is a good question, sir. तुमको ये अच्छा सवाल है सर. Water is flowing through a pipe of 15 centimeter diameter. The gauge pressure at a section is given by 40 into 10 power 3 Pascal is Newton per meter square. And the mean velocity is to be 2 meter per second. And the center line of the pipe is 10 meter above the datum. Z is equal to 10. Okay, the total head given by, and the kinetic energy correction factor is given by 1.2, and he asks us to take G as 10 meter per second square. Excellent. अब देखो sir, what is the total head, sir? P by W plus V square by 2G, correct? Plus Z. This is the total head. Absolutely correct. But यहाँ पे you may be committing one mistake. What is that? Here the kinetic energy correction factor is given. Whenever the kinetic energy correction factor is given, you are supposed to take, yes, alpha. So the total head is given by P. What is the pressure, sir? 40 into 10 power 3 by rho. Which fluid is flowing? Which fluid is flowing, sir? कहीं पे नहीं दिया, sir. Water. So rho is 1000 and G is taken as 10. Correct. Plus alpha is 1.2 V square. What is the velocity, sir? Velocity 2 square by 2 into G is 10 plus Z. Z is 10. Am I right, sir? क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, सर. तो ये गया 4 प्लस ये कितना आएगा 2. 12 2 24 मतलब 2.4 प्लस 10. सो कैन आई रेट दिस एज 14.24 कुछ आ रहा है, सर? 14.24 कुछ आ रहा है? यस. बिल्कुल सही कहा आपने. बिल्कुल सही कहा. वंडरफुल स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया. ठीक है, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बहुत बढ़िया रे. वी आर नॉट यूजिंग कैलकुलेटर. अब देखो, इन दिस क्वेश्चन आई विल गिव यू कॉन्सेप्ट्स. एक्चुअली समटाइम्स सच क्वेश्चंस कैन कम. तो देखते हैं सर कैलकुलेटर की जरूरत है या नहीं है. सच अ बिग क्वेश्चन कैनॉट बी आस्क्ड. बट एक बार थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लीजिए सर. व्हाई आई एम गिविंग इज देयर इज अ पॉसिबिलिटी समटाइम्स सडनली रैंक एंड साइकिल एफिशिएंसी पूछता है, तो यू शुड नॉट बी इन प्रॉब्लम. चलो फर्स्ट लेट्स ड्रॉ रैंक एंड साइकिल. Is this correct or wrong, sir? Is this correct or wrong, sir? Turbine, condenser, pump and boiler. Correct. अब देखो सवाल देखो सर. A steam turbine receives steam at 15 bar. What is the enthalpy at which the steam is emitting? 3147.5. 3147.5. And what is the entropy, sir? Entropy 7.1. And the entropy is 7.1. ठीक है. What other data is given? At the condenser, HF is 151.5. This is HF. देखो ये HF is equal to H3 is equal to, how much is that given, sir? HF is, this is 151.5.
151.5 and ये क्या है रे 2 I'm sorry and what is hg this one enthalpy this one hg is given what is hg नहीं दिया है सर डायरेक्टली hfg is given 2416 directly hfg is given 2416 very good now and enthalpies are also given sorry entropy 0.5 to 7.8 here sf is equal to sg is equal to point कितना था सर ये 0.52 0.52 and sfg is given as what is sfg अरे यार कहां गया sfg कहां गया 7.8 व्हाट इज योर कंक्लूजन सर व्हाट इज योर कंक्लूजन अब करेंगे सर ये अच्छा क्वेश्चन है सर हाँ एनी अदर डेटा गिवन नो वेरी सिंपल क्वेश्चन सर पावर पूछा है नेग्लेक्टिंग पंप वर्क फर्स्ट चलो फॉरगेट अबाउट दिस क्वेश्चन कैन यू टेल मी व्हाट इज द एफिशिएंसी इट इज द टर्बाइन आउटपुट माइनस पंप लेकिन इन रैंकिन साइकिल द पंप यू आर पंपिंग दिस लिक्विड तो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज वेरी स्मॉल वीडीपी सो पंप वर्क विल बी नेग्लिजिबल what he also said neglect pump work so directly I'll take h1 minus h2 by input कहां से सप्लाई करे सर 1 से लेकर 4 तक but I can write whenever the pump work is negligible enthal when the pump work is negligible it means h3 h4 are same h3 h4 are same so we are supplying from 1 to 4 but 4 is also equal to 3 supply will be h1 minus h3 that's it, sir. That's it, sir. So H3 is already given. H3 is 151.5 because H3 is HF. Now, in order to calculate enthalpy at 2, how to calculate? It is in the wet region, sir. So whenever it is in wet region, it will be HF plus X into HFG. So no problem at all. So in our HF is already known. HF is already known. 151 point something. HFG is already known. But in order to calculate enthalpy at 2, I need x value. How to find out x value? Can anyone help? मैं बताता हूं S1 is equal to S2. S1 is equal to S2. S1 is what is S2? SF plus X into SFG. That's it, sir. S1. What is S1, sir? कहां गया रे हो? 7.1 is equal to SF. SF is 0.52. Plus x into SFG is 7.8. Don't use calculator. Don't use calculator. 7.1 minus 0.52 divided by 7.8 will be x value, sir. क्या आप बता सकते हैं x का वैल्यू? चलो एक प्रॉब्लम के लिए यूज करेंगे सर चलो केवल एक प्रॉब्लम के लिए लेकिन इन एग्जामिनेशन वो इजीली कैलकुलेट करने का देता है सर इजीली 0.8436 ठीक है now put it here so h2 will be equal to hf is 151.5 plus x is 0.8436 into hfg what is hfg sir hfg 2416 तो ये ऐसे क्वेश्चंस शायद कम आएंगे लेकिन if this question comes he will give you in such a way that the calculation is easy. I repeat, sir, if such questions come, he will, why I am giving this is there is a possibility of applied thermodynamics Rankine cycle. So he will give you, if such questions come, calculation will be easy. So can you tell me the value of H2? I should not use, but एक क्वेश्चन के लिए ठीक है सर एक क्वेश्चन के लिए ठीक है तो H1 is 3147.5 minus H2 is already known 2189.6 by H1 is 3147.5 H3 what is H3 H3 is 151.5 ये क्वेश्चन कर लेंगे
Please, why I gave this is there is a possibility. 31.9 कुछ आ रहा है सर. 31.9 कुछ आ रहा है. May be wrong. Yes, I think it is correct. I think it is correct, na? Yes, yes, yes. So there is a definitely such big questions they don't come. But why I have given, there is a reason. There is a reason. The reason is mentally you should get prepared for this. Suddenly ऐसा आता है तो. Okay, not pick this. हाँ, ये करो सर. Why I am doing all this is you should know the complete approach. पता नहीं where from the questions come. Come on, do it. I want the answer. फौरन बोलो आंसर इसका. बोलो बोलो. Give me the answer. A rectangular plane surface width 2 and height is placed vertically in water. What will be the location? It is placed vertically. Center of pressure of the surface uh, below the free surface. अच्छा 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 अच्छा. देखो सर. क्या है सर ये? Width is 2, height is 3, and it is okay. Width is 2, height is 3, and it is the top edge is placed 2.5 meter. 2.5 meter. Okay. Okay. This is the top edge. देखो. Good question, sir. And if you see the other view, it will be like this. The width is 2 meter and the height is 3 meter. Okay, sir. What is he asking in the question? He is asking center of pressure. How do I calculate? For vertical surface, the depth of center of pressure is given by x bar plus ig by ax bar sin 90 is 0. Okay, no problem at all. तो XCP, what is XCP? देखो एक बार, प्लीज सुनिए केयरफुली. XCP, ध्यान से सुनो. तो सेंटर ऑफ देखो x बार इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी से दिस इज माय x बार. तो दिस लेंथ इज 3, तो ये 1.5 होगा सर. तो व्हाट विल बी दिस? 2.5 प्लस 1.5, दिस विल बी 4. x बार इज 4. तो XCP इज इक्वल टू दिस इज 4. आई रिपीट सर. देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पे है, तो इफ इट इज 3 इट विल बी 1.5. बट आई वांट फ्रॉम द फ्री सरफेस 2.5 प्लस 1.5 is 4. व्हाट इज IG? P d cube 2 into 3 cube by 12 by ax bar. What is the area? 2 into 3 and x bar is 4. तो कितना आ रहा है सर? 4 plus this 2 is gone. This 3 मतलब ये स्क्वायर रहेगा. और कुछ रहेगा सर? 3 ones 3 fours. I think you are getting this as 3 by 16. करेक्ट ना? Is it correct, sir? अरे कोई तो बोलो रे. Is it 3 by 16? करेक्ट ना? Come on, come on. Is it okay? Is it okay?
इज द आंसर करेक्ट? अरे कुछ तो बोलो रे, कुछ नहीं बोल रहे आप, मैं देख रहा हूं आपका, आपके कमेंट्स देख रहा हूं सर। इज दिस करेक्ट? 4.18, इज इट करेक्ट सर? गलत है? करेक्ट है ना? आई थिंक इट इज करेक्ट। या नेक्स्ट ये करो। करेक्ट। कम ऑन कम ऑन। अब देखो कंटिन्यूसली ले लेंगे। एनीवन, व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? It, which of the following is not the characteristic? Not बोला है। It should have high toughness, correct है वो। It should have high resistance to softening, correct है। It should have high hardness, correct। Coefficient of friction should be high. Oh my God, is the characteristic of cutting tool? Should the coefficient of friction be high? गलत, it's wrong, it's wrong। ये करो। एंड वेरी सिंपल सर, स्टेज देखो, ये नोजल है और ये ब्लेड है, इसको बोलते हैं हम इंपल्स टर्बाइन में, वी कॉल इट एज अ स्टेज। तो यू नो द टोटल स्टेज एफिशिएंसी इज इक्वल टू नोजल एफिशिएंसी इनटू ब्लेड एफिशिएंसी। दिस एफिशिएंसी इनटू दिस एफिशिएंसी विल गिव मी द ओवरऑल एफिशिएंसी। तो अगर आपको स्टेज एफिशिएंसी चाहिए, ध्यान से सुनिए सर, इन नोजल from in impulse turbine from the nozzle it impinges on the blade। तो नोजल का कुछ एफिशिएंसी होता है, ब्लेड का कुछ एफिशिएंसी होता है। दिस देखो, एक सेकंड प्लीज लुक एट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, एक सेकंड। ओके, लेट अस से दिस ए, दिस इज बी। नो देखो, दिस इज P1, दिस इज P2 एंड दिस इज P3। व्हाट विल बी द ओवरऑल एफिशिएंसी माय डियर स्टूडेंट्स? आप बताइए, व्हाट विल बी द ओवरऑल एफिशिएंसी? What will be the overall efficiency? Output by input. Overall, this is the input, this is the output. ठीक है सर। You tell me what is the efficiency of A? A का efficiency. For A, this is input, this is output. So P2 by P1. For B, what is the efficiency B के लिए? B के लिए P2 is input, P3 is output. P3 by P2. Now let us see what is efficiency of A into efficiency of B. This is P2 by P1 into P3 by P2. So ये कट जाएगा, P3 by P1 आएगा। So can I write overall efficiency as product of efficiencies? Yes sir, product of efficiency। तो यहां पे क्या होता है, इन इंपल्स टर्बाइन देयर इज अ नोजल, ये नोजल है सर, नोजल से फ्लूइड आएगा, आके वो ब्लेड्स पे इंपिंच करेगा, एंड दिस कंप्लीट यू कॉल इट एज स्टेज। सो देयरफॉर अगर आपको स्टेज एफिशिएंसी चाहिए, देयर विल बी नोजल इनटू देयर विल बी ब्लेड एफिशिएंसी। तो नोजल इनटू ब्लेड इज स्टेज एफिशिएंसी, नोजल इनटू ब्लेड इज स्टेज एफिशिएंसी। वन इज द राइट आंसर। इज इट ओके सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करो, देखते हैं सर। बहुत बढ़िया रे। Come on, come on. Think for simply supported beam, and if there is a UDL, I think it is WL by 2, WL by 2. Am I right, sirs? Am I right, sirs? Correct. So what we, so if you see the elastic curve, it will be something like this. Here the slope is 0. What will be the slope here, sir? I think it is WLQ by 24. Now I don't remember.
यस यस, वन इज करेक्ट ना। ऐसे मेन इंपॉर्टेंट थोड़ा याद रख लेना सर। ठीक है सर, ये करो। तो एक काम करते हैं, शैल वी स्टॉप हियर डियर ऑल, शैल वी स्टॉप। बोलो, बिफोर आई क्लोज आप बोलो व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस, मतलब नो वन इज कमेंटिंग बिफोर वी स्टॉप। चलो कोई बात नहीं, लाइक आई हैव सीरीज ऑफ क्लासेस सर, बहुत क्लासेस ले रहा हूं, तो प्लीज प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, ठीक है। देखो, ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे, कोई बात नहीं सर, ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे, कोई बात नहीं। देखो, we know he is asking momentum thickness. What is the equation of momentum thickness? 0 to delta u by u infinity 1 minus u by u infinity into dy should be correct na sir. So theta will be equal to 0 to delta u by u infinity is y by delta 1 minus u by u infinity is y by delta into dy. Excellent, sir. Theta will be equal to 0 to delta y by delta into dy, y dy by delta minus y into y is y square by delta square, y square by delta square dy. So theta will be equal to y dy is y square by 2 delta minus y square dy is y cube by 3, so delta square, limits are 0 to delta, so ye delta square by 2 will be delta by 2, delta cube by 3 delta square will be delta by 3, 3 minus 2 is 1, so it will be delta by 6. शायद ये आ सकता सर, I think delta by 6, there is a possibility of this question sir, there is a possibility of this question. ठीक है, let's not waste time sir. ये अगेन इसका मैं हिंट दे दूंगा एंड यू हैव टू डू इट बिकॉज कैलकुलेशन पार्ट, इसका मैं हिंट दे दूंगा, यू हैव टू डू इट। ठीक है, व्हाट इज दैट? देखो एक सेकंड देखो, ध्यान से सुनो सर। The emissive power is, sun is treated as a black body. The emissive power is given by sigma t power 4. For a black body, it is sigma t power 4. The emissive power is given by sigma t power 4. Already you know sigma as 5.67 into 10 power minus 8 unit watt per meter square Kelvin power 4. Without knowing temperature, I cannot solve. Nowhere the temperature is given. The only thing that you should note in this is, देखो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे सर, आपको टेम्परेचर कैलकुलेट करना आसान होगा, वैसे क्वेश्चन आएंगे। यू नो दी Wien's displacement law says sigma max t is equal to constant, Wien's constant, तो क्या होगा सर? ऑलरेडी दिस कांस्टेंट इज गिवन, देखो लैम्डा, व्हाट इज लैम्डा? 0.49 into t is equal to constant c. Constant c is 2890. Wait, unit देखना सर एक बार, यूनिट देखना, दिस इज इन माइक्रोमीटर, टेम्परेचर इज इन केल्विन, माइक्रोमीटर केल्विन, करेक्ट है। यहां से यू गेट द वैल्यू ऑफ टी, यहां से यू गेट द वैल्यू ऑफ टी। कितना आ सकता है सर, एक बार गेस मारो। ये हाफ है सर, ये हाफ है, तो डबल होगा, ये डबल होगा। यू ट्रीटेड एज हाफ रे बाबा, यू ट्रीटेड एज हाफ, तो ये डबल होगा। कॉमन सेंस देखो, ये हाफ होगा तो कितना, ये डबल, तो आई थिंक यू आर गेटिंग दिस एज 5000 कुछ आ रहा है सर, 5 डबल करो 0875, इज इट करेक्ट सर? रफली ये आना चाहिए, रफली ये आना चाहिए। 0.49 2890 5897, ये आ रहा है सर रफली। ठीक है सर, 5897 कुछ आ रहा है, वेरी गुड, ये आएगा अराउंड 5800 कुछ आ रहा है सर। ठीक है, नाउ यू पुट द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर हियर, यू गेट द वैल्यू, कुछ नहीं है, ये इंटू 10 पावर 4 कैसे करते, इधर देखो मैं इसका आंसर देता था। देखो एक सेकंड, हाउ डू वी डू दिस सर? दिस इज रफली 5.5 ले लो और इसको 6000 ले लो, क्या करेंगे, बिकॉज पावर 4 है तो यू कैन इजिली डू इट।
तो कितना आ रहा है सर? सिग्मा इज नोन, टी इज नोन, यू कैन मल्टीप्लाई एंड गेट द आंसर, दैट इज द लॉजिक। इज इट ओके? कैन यू डू इट? एक बार देखते हैं सर। 5.6 देखो, 5.67 इंटू 5.8, ये आ रहा है देखो, आई थिंक वन इज करेक्ट ना। आंसर यू गेट, नो बी नहीं, शायद वन करेक्ट आ रहा है देखो। आंसर दैट यू गेट इज इन वॉट, आंसर जो आ रहा है वॉट में आ रहा है। सो दिस यू आर गेटिंग इट एज वॉट। इफ यू डिवाइड विथ 1000 यू विल गेट इट इन किलोवाट। आई थिंक वन इज करेक्ट। एक बार देख लेना सर, एक सेकंड, आई विल डू इट सर, डोंट वरी। Sigma t power 4. Sigma is 5.67 into 10 power minus 8. This is already watt per meter square Kelvin power 4 and T is 588. क्या रहा है सर? 2890 ना? Such questions can come sir. 0 divided by 589. 6.86, ये आंसर आना चाहिए, ये आंसर। और दिस इज 6.86 इंटू 10 पावर 4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। किलोवाट किलोवाट, यस, वन इज करेक्ट। बी करेक्ट है या ए करेक्ट है? क्या हो रहा है सर आपको? एक बार चेक करो, इज ए करेक्ट और बी करेक्ट? इज ए करेक्ट और बी करेक्ट? चेक करो। A is correct. That's why, yeah, previous also we made the same mistake. Where I gave you one question, याद है? I gave one question. Joule per kg per Kelvin, kilojoule per. This is where you are committing mistake. यहीं पे नॉर्मल स्टूडेंट एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट को डिफरेंशिएशन कर रहा है सर वो। एंड आई एम सॉरी सर आज। सो जब मैं नेक्स्ट सेशन लूंगा तो आई डू नॉट वांट दिस मिस्टेक्स टू बी रिपीटेड, स्पेशली किलो जूल, जूल, ये मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए सर। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, ये बोलो। ज्यादा नहीं हुए सर, तीन तीन ही क्वेश्चन में ज्यादा कैलकुलेशंस थे सर। सॉरी, ओनली टू क्वेश्चंस, प्लीज, ओनली टू क्वेश्चंस। अगर ऐसे आते तो क्या करेंगे सर आप? सीरियसली सही बोले। एक सेकंड, अमरीश ने बोला ये सेशन में थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है। मुझे पता है सर, लास्ट सेशन में एक भी कैलकुलेशन नहीं था। अगर ऐसे कैलकुलेशन आते तो क्या करेंगे बोलो? आप बोलो सर, यू टेल मी। इफ देर इज अ कैलकुलेशन व्हाट विल यू डू? दैट्स व्हाई दो तीन क्वेश्चंस हेवी कैलकुलेशन से देना ही पड़ेगा। डू यू नो द रीजन फॉर दैट? सम स्टूडेंट्स वेस्ट टाइम इन दिस कैलकुलेशन क्वेश्चंस। इंटेलिजेंट स्टूडेंट इसको स्किप करके बाद में आते हैं, दैट इज द रीजन। Abrasive grain of 10 is a coarse one, correct na sir? I think 10 to 30 coarse, 30 to 60 क्या medium, 60 to 100 वैसा 150 fine, and above that super fine, correct है ना sir? I think yes, yes, yes. Is two correct sir? Is it correct sir? Sir, please understand, if ये सही है सर, ये सही है। देखो प्रोडक्शन के क्वेश्चंस आए, इंडस्ट्रियल के क्वेश्चन आए, सॉम के आए, देन क्या है, थर्मो के आए, एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सब सब आ रहे, टॉम के। अब ये करो, इसका आंसर दे दो। Which number the relative thickness of hydrodynamic and thermal? Which number is linking hydrodynamic and thermal? I think
Prandtl number. I think Prandtl number. Prandtl number. When do you expect hydrodynamic and thermal boundary layers to be same? When the Prandtl number is 1. Very good, sir. ये बोलो. The circular pitch is equal to pi into d by t. Therefore, the circular pitch is equal to pi. What is d by t module? The circular pitch is equal to pi into module. Is A correct, sir? बिल्कुल सही कहा आपने. ये करो, इसका आंसर दीजिए. पढ़ना पड़ेगा. Revolving centrifugal forces. इस शब्द को ले लो. Short tube is used for measuring velocity of flow. It is an application of Bernoulli's equation. करो सर. चलो आप इंतुजियाज्म दिए तो कर ही देंगे. Come on. Must question है सर. Two elastic bars of same material of equal length. One is circular. ये मुझे मत बोलना सर ये कैलकुलेशन है बोल के. मत बोलना, ये बोलना ही नहीं सर. हाँ देखो 80 mm diameter, other is of square cross section, both absorb same amount of strain energy under the axial force. What will be the ratio of stresses in the circular cross section to the square cross section? मस्त क्वेश्चन है सर. मैं इसको बिना कैलकुलेटर से करके दिखाऊंगा. विल इट बी ओके? चलो. There is one bar and another is square one. देखो its diameter is 80, इसके dimensions भी 80 by 80 mm. ठीक है सर. The dimensions are given as 80 by 80. Very good sir. क्या बोला है सर? They absorb same strain energy. Can you give me the equation of strain energy? Sigma square by 2e into volume. This is the strain energy. For circular should be equal to sigma square by 2e into volume. This is for square section. At least you know this equation. At least you know this equation. Yes, sir. So, can I cancel out 2e, 2e? Because they are made of same material. Wonderful, sir. Sigma circular square. What is the A volume? Area of circular section, length of circular section. ये क्या है सर? Square section into volume. What is the volume? Area of square section, length of square section. Both are made of same lengths. So he is asking circular square by square is equal to area of S by area of C. Okay. So if you want the ratio of stresses, it will be under root of AS by AC. Some students said, sir, ये तो लेंदी क्वेश्चन है. तो एग्जाम में अगर सिर्फ इतना तक ही दिया तो क्या करेंगे सर? ऑप्शंस ए ऐसे दिएगा. मान लो ऑप्शंस आर गिवन लाइक दिस.
Option A, AS by AC. Option B, AC by AS. Option D, root AS by AC. Option D, root AC by AS. हो गया ना सर? डोंट थिंक दैट लेंदी और सो, कॉन्सेप्ट एब्जॉर्ब कर लो, बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ सोर्स जो है हम लिए, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस लग सकते, ये बोल रहा हूं सर, ठीक है? तो व्हाट इज दिस रूट ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर इज, देखो स्क्वायर का एरिया क्या है सर? 80 इंटू 80, एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस सर्कुलर सेक्शन? पाई बाई 4 डी स्क्वायर, 80 स्क्वायर, तो 80 80 कट गया, रूट 4 बाई पाई। वेट, अब कैलकुलेटर की जरूरत है, अब देखते हैं सर। रूट ऑफ 4 बाई पाई इज 22/7, दिस इज रूट ऑफ, ये 2 1s 2 11s, तो 14/11। अब देखो 14/11 इज 1 पॉइंट सम, देखो एक सेकंड, तो 14/11, 11, तो ये 3 आ गया ना, 0.0, तो कितना होगा सर ये? रफली 3 ले लेंगे सर, 11 3 33, रफली रूट 1.3 क्या हो सकता है सर? 1.1 समथिंग होता है, रूट 1.3 1.1 समथिंग होता है सर, वाई? बिकॉज 121 का रूट होता है 11.11 होता है, 121 इज 11, इसको 130 ले लो, समझ में नहीं आ रहा तो 1.1 समथिंग आना चाहिए। लॉजिक समझ में आया सर? 1 पॉइंट, यस, वाह, कुछ आइडिया आ गया सर? ये होता है बाहर रे बाहर, ये बोलते हैं बाहर रे बाहर। बोलो गोलू, चलो विल क्लोज इट। Ball and socket joint is a spherical pair. Yes. हाँ, ये बोलो। The function of dash is to increase the temperature of air preheater. If the function of air preheater is to increase the temperature of air before it enters the furnace, it also improves the efficiency. ठीक है ना? बोलो बोलो, ये करो, हो गया सर, वी आर नियरिंग। You know what is the equation of drag force, sir? CD into half rho A U square. Is it correct, sir? Is it correct? He is asking drag force. The drag coefficient is given as 1.2, half. The density is given. कितना density दिया? कौन सा fluid है सर? कौन सा fluid है सर? Water. देखो, what will be the drag force exerted on the plate of side when the plate is moving normal to the water? अच्छा, एरिया कितना है सर? 2/2 into u square. What is u square? Velocity is given, so it is 4 square. कितना आ रहा है सर ये? I think there is no need of any calculator here. Correct. 16 to 32, 32 into 1.2. तो 12 to 24, 2 12 3 36, 380, 38.4, 38.4 into 10 power 3, ये 10 power 3 ऐसे है, so 38.4 kilonewton. I have not used any calculator, sirs. I have not used any calculator, sirs. Correct? हाँ, ये करो, देखते हैं। आई थिंक 40, ये तो सिंपल है सर। ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है सर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द डिग्री ऑफ रिएक्शन? बोलो, व्हाट इज द आंसर टू दिस? What is degree of reaction? It is the enthalpy drop in rotor to the enthalpy drop in a stage. No, 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 no.
इट इज द एंथैल्पी ड्रॉप इन रोटर टू द एंथैल्पी ड्रॉप इन स्टेटर, नहीं स्टेज, स्टेज, enthalpy drop in rotor to the enthalpy drop in stage. 2 is the answer, sir. Please, ऐसे गलतियां अगेन मत करना. It's not in the stator. Stator means fixed blades. Fixed blade plus moving blades constitute a stage. So the degree of reaction of a turbine is given by enthalpy change in the moving blades or rotor to enthalpy drop in moving to the enthalpy drop in क्या बोलते हैं fixed blades. This M is moving, F is fixed. This we call it as stage. So this can also be written as enthalpy drop in rotor to the enthalpy drop in stage. बिल्कुल सर. ओके, तो 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिए, विल टेक केयर. हाँ ये करो, ये आएगा सर, ये करो. आई थिंक 2-3 क्वेश्चंस भी लेफ्ट, सिंपल थे वो. बोलो ये. Up to the elastic limit, energy absorbed. It is resilience. What is toughness? Absorbed up to fracture point. Up to fracture point toughness आएगा, up to elastic. Correct? I think we left 3 questions, लेकिन अच्छा पेस हुआ सर. We covered around 50 questions. Do you want me to continue such sessions or stop permanently? Now I'm stopping the class, sir. Now I'm stopping. Do you want me to continue or stop these sessions? ठीक है. एंड प्लीज प्लीज शेयर योर रिक्वेस्ट. लेकिन आप लोग क्लास के बाद अच्छा लगता है तो यू लीव अ कमेंट. ऐसा ना, इट्स अ मोटिवेशन फॉर अस. कोई बोले, कोई आई हैव अ रिक्वेस्ट. पिंकू यादव, व्हाट इज योर रिक्वेस्ट? प्लीज पिंकू यादव, व्हाट इज योर रिक्वेस्ट? बोलो, व्हाट्स योर रिक्वेस्ट? सर आई हैव माय बार्क इंटरव्यू 20th में, प्लीज एंड. अच्छा ठीक है, ठीक है. ओके, आप मैसेज भेजना सर, मैसेज भेज देना. ठीक है. बार्क इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी थोड़े किए और थोड़े करना है. ठीक है, चलो फिर आज के लिए बस इतना. सो विल मीट अगेन. ओके, प्लीज इफ द सेशन इज गुड, अच्छा एडवांटेज हो रहा है तो यू लीव कमेंट. ठीक है, ठीक है. बाय बाय.